Shukra Naik is sick. No, it's not COVID-19, it's just diarrhea. But in this village, anything that doesn't go down on its own is a matter of life and death. And everyone knows. Shukra's too weak to walk. Half the village bears him across an arduous journey of 11 kilometers, without the assurance that Shukra will make it in time. And that's how it plays out every time someone's unwell. Though not apparent, Shukra's case points to conditions that support and aggravate malnutrition, which we at Atmashakti wanted to resolve in the tribal villages. Home to around 25% of Odisha's population. More than half the under 5s here show signs of severe malnutrition. गवर्नमेंट का डाटा देखेंगे तो इसमें से माल न्यूट्रिशन से कम बहुत बच्चा और महिला मर चुके हैं ये चारों ब्लॉक में बेसिकली. Malnutrition has a host of interlinked causes. Shukra's diarrhea could be from one or more of these. Contaminated water, open defecation and absence of sanitation, poor nutrition, and poor personal hygiene. Compounding the situation, there are no medical shops for miles, no dependable health services, and no roads to bring doctors to the ailing. Which is why in 2014, Atmashakti began its health intervention in one of the most backward districts of Odisha, Kandhamal. Our goal? 1,000 malnutrition-free tribal villages. We began mobilizing the village groups or sangatans to make villagers aware of health amenities and services that the government promises. Trained sangatan members tell them how to avail of government schemes they are entitled to. गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस को गांव में कैसे पहुंचना है, इसलिए गांव के जो आंगनबाड़ी सेंटर्स होती है, आशा होती है, उसको कैसे अगर डीएक्टिव होती है या काम नहीं करते हैं तो उसको रेगुलराइज करने के लिए गांव लोगों के साथ उसको डिमांड करके उसको रेगुलराइज करने के लिए भी मैं उसको सपोर्टिंग करता हूँ. They learn to agitate and make representations to the respective authorities to provide basic facilities. In 2019 November, the Sangatans motivated the villagers to be part of a massive month-long campaign demanding functional health services and education facilities in rural Odisha. They presented to the Chief Minister factual feedback on health-related infrastructure, services and policy. One outcome was in March 2020. 1,038 doctors were appointed to health centers across the state. That was a small inroad in the huge gap in basic health services. The Sangatans also demanded sanitary utilities like toilets and drainage systems. These are done through the already existing MGNREGA schemes. Alongside, we trained and established health animators for every few blocks. They conduct water quality tests and notify authorities where safe drinking water is not available. Where government health centers, pharmacies and services were completely absent, we put across the idea of creating a first aid health kit. हम लोग एक गांव का एक बेसलाइन सर्वे करते हैं कि क्या क्या बेसिकली बीमारी होता है उसी गांव में. उसी हिसाब से हम लोग फिर गांव वालों को डिजीज के हिसाब से हम लोग उसको दवाई खरीदने के लिए बोलते हैं. ये लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ से दवाई लाएंगे, स्वास्थ्य साथी कौन होगा, हर हाउस होल्ड में से कितना रुपया देंगे ताकि एक हेल्थ किट बना पाएंगे. The Sangathan Swasthya Sathi or health friend is trained to give basic advice and sell the villagers over-the-counter medicines at minimal prices. 3 साल से छोटे बच्चों को नहीं देते हैं और जो प्रेग्नेंट ले लिया उनके लिए मेडिसिन नहीं रहता है, बाकी सब मेडिसिन रहता है इसमें. The health animator sits with the Swasthya Sathi and periodically monitors the stock, supplies, usage and expiry dates of the health kit. After the first success in 20 villages,
The health kit was soon replicated in another 3 blocks to cover 181 villages. से मेडिकल दूर को जाई पार नथिले बेसी दूर थिला सर गोटे गाड़ी भड़ा कले सर 400-500 टंका रे जाउछे 400-500 टंका काई देबो हम 220 टंका रे काई के हम सेटा मेडिसिन खाई भलो हेबो ना घरे रहि के. For preventive intervention, we got an expert in medicinal plants and naturopathy. Pradeep observed that the food diversity of the tribal forest gatherers have been replaced with a mono diet of rice. हम लोग जो चावल खा रहे हैं इसमें चावल में हमको कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, तो ज़्यादा एक टाइप का भोजन होने से हम लोग देख रहे हैं माल न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ रहा है. और एनीमिक तो पहले समय में उतना नहीं था क्योंकि उस समय हम मंडुआ खाते थे जो रागी. Villagers benefit from our demonstrations about the nutritional and medicinal values of wild and cultivated flora. Many learn to make Pradeep's blood-enhancing tonic from local ingredients. Its efficacy was verified in health camps which Sangatans organize periodically. Here, A&Ms conduct blood tests, especially for pregnant and lactating mothers. Health animators make sure that those with low hemoglobin take the blood tonic regularly. मैं 3 महीने के पहले वो महिला में हम लोग बता था वो आयरन सिरप खाने के लिए हो. जब हम अभी टेस्ट किया ना 4 महिला को 3 महिला को इम्प्रूव है लेकिन 1 महिला को इम्प्रूव नहीं है क्योंकि वो लैक्टेटिंग मदर है. 3 बेला खाइली सप्ताह खाइली तापर एबे भल होइछि ठीक चालुछि मोर 5 दिन रे सफा करूछि. We encourage villagers to go to the local Ayurvedic physicians instead of quacks, known as gunyas. Moreover, the simple formulations we have taught them tackle common ailments besides saving them money and difficult trips to far-off hospitals. मु प्रस्तुत थिला बेले सेते बेले मु बहुत दुर्बल थिली तापरे से औषध खाई कि मु एबे सुस्थ रे भलो हेची आउ सुस्थ सबल अछि. 3 मास पर हेबो आगा मोर खास रोग रे मु थिली आउ सरकार औषध अनुसार मु केते टेस्ट करी कि भी खाइला अनुसार भी से टोटल कमिला नाही. एनु करी जीविका सुरक्षा मंच तरफरु आज्ञा माने आसीथिले आउ कहिले जे एटा खाओ कहिबारु मु तुलसी पत्र रस बासंग पत्र गोलमरीच एंती करी कि मु केते दिन सप्ताहटे भितरे मु पीली आउ 4 भागरु 3 भाग टोटल कमिलानी टिक्की अछि आउ सप्ताहटे खंडे पीले सब मो पई संपूर्ण भलो हेइ जिबे. Today, some villagers have revived their old explorations for food and medicine. They've also learned the health benefits of their own kitchen garden, growing a mix of fruit trees, climbers, seasonal vegetables and greens. Jackfruit and papaya, which they earlier ignored, are now possible foods. हम कोशिश कर रहे हैं गांव में जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो बच्चा है तो इनके हर थाली में हर दिन में ग्रीन वेजिटेबल जाए. Their determination overcomes the challenges of the fast-drying mountainous soil that does not retain water, of water scarcity, of domesticated, free-running fowl, goats, sheep and pigs that threaten every stage of cultivation. Health animators also tackle other contributing causes. माल न्यूट्रिशन हटाने के लिए फूड प्रोडक्ट्स के साथ हाइजीन की ज़रूरत होती है. स्कूल बच्चों को ही हमने पहले टारगेट लेकर उनसे कैसे हाथ की सफाई करके खाना, उनका नाखून और ये सब साफ सफाई ऊपर ज़्यादा फोकस किया. मासिका ऋतुस्राव करुछंती से माने कौन कि आगे जो कपड़ा व्यवहार कर से कपड़ा व्यवहार न करी पेड़ व्यवहार करंतु बोली को से मानकु आमे सचेतना दउचु. ऋतुस्राव होउछंती से माने कहू नांती जे जणे जणे 10 दिन 12 दिन 15 दिन 18 दिन भी रहबे से माने चालो मेडिकल जीवा बोले नाई दीदी मेडिकल जीवा नाई दीदी मेडिकल जीवा नै. ए जो गुप्त रोगटा तांकर जो रही जाउची सेटा टिके झिया मान को प्रति बहुत किछि एरिया दृष्टि रे असुविधार सम्मुखीन हेबार पड़ुछि. It begins with treating the disease of silence, apathy and ignorance. Progress is finding that the best medicine is taking responsibility for our own health. We are truly healing when Sumati marches in a rally for clean water.
Or when Santa takes an application demanding visits from the A&M. When Rukmani nurtures her kitchen garden. When Kunti cooks a new dish for her family. When the Swasthya Sathi takes Sumu's temperature and gives him a paracetamol for fever. And when Anil and Kula take yet another dose of homemade medicine. For all of them, health dawns in awareness and action.